Okay, thanks Shivapriya. So हमने yesterday we learned this functions in pandas. हमने देखा how we can import. We have also seen how we can read a file, and then we have also seen. So हमने yesterday we learned this functions in pandas. हमने देखा how. Okay. So we imported this employee records file, and this is how the employee records file looks like. It had some columns, some rows, and information about employees. Then we saw we could use df.info to get to know more of our data set, and df.describe and df.shape to get what shape of the data set we have. Df.size will give you how many columns and rows uh, completely totally we have. Then very important, we have seen how to find null values कैसे ढूंढनी है हमारे डेटा सेट के अंदर. So you can see in our data set there can be this NaN meaning not a number values. तो ये usually खाली boxes होते हैं उसके अंदर. You won't see any float, you won't see any text, you won't see any integer values. So these values usually are empty boxes. Okay, so in order to find those empty boxes or null values, we use these is na or is null functions. So both functions completely work identical. So if you simply say data frame dot is na, so it will give you like this is not na, this is not na, this is na, this is na, this is not na, this is na, like this, not a number values. And if you simply add dot summation in front of it, it will give you for which column if you have any null values. So it will give you 0 value null values. For weights in kg we had 3 null values. You can see for weights in kg we had 3 null values, 1 2 3. Then we can also check like this. We take this column dot is na dot summation. Okay, we directly take the column name, we apply the filter that is na, and then we add the dot sum inside it on it. Then we get the value as like how many null values that we have in this particular column, basically in this particular column. Then we have seen this is null, so this is exactly same as is na. You can go through it. I hope you already have gone through it for the yesterday's lecture. So going ahead, we have also seen this how to calculate mean value or average value or median value, a summation, minimum, maximum, standard deviation, variance, cube root, square root, or square or cubes, etc. So we can do it using directly on a data frame. It means these function are present in what pandas function, because this is a pandas column. Df salary is a panda column, right? Then you said dot mean. It means you are saying give me the mean value, meaning average value of this salary column. Okay, so we got this average value somewhere around 11 or 1,19,000 dollars maybe they were spending on the salaries. Then we have also seen df.describe also give me mean values, median value, 25%, 35%, and so on, maximum values, minimum values. I just use this loc function. Inside this loc, we need to use the literal values, actual values from the data set. Okay, so when I say mean, it gave me mean for all the columns. I could also use ILOC meaning we need to add index here in the LOC filter. LOC is again a filter, and it gives similar kind of
result as LOC. IOC and LOC are same, but LOC we need to add a exact value, and in ILOC, that is index location, you need to add indices. So mean ka index was 1, so we got this kind of result. You can also use mean using numpy. So we were checking data frame dot mean, meaning pandas के अंदर we had this mean function. We also have numpy के अंदर mean function, and we also have statistic के अंदर भी mean function होता है. Okay, so you can get mean using pandas, numpy or statistics. You can also get median using pandas, numpy, statistic. Okay, then you can also get mode. So mode is very specific to the statistics because you cannot find mode using numpy or pandas. Okay, you can get minimum values, you can get maximum values like this, you can get using numpy, you can get summation values, you can also get a count, you can also get standard deviation, variance, standard deviation and variance in this using statistics. Okay, so all these things that we have seen yesterday, you can also get square root, numpy dot cube root, numpy dot square, and df square or df cube, we can say. So all these calculation can be done using numpy or pandas or statistics. Okay, after this, yesterday we saw sorting. Okay, हमने कल देखा था sorting. So we discussed there are two types of sorting. First is sort by index meaning these are your indices, this is column, these are columns, and these are rows. So using these columns and rows you can sort values. Okay, and then today we will see sort values. Sort values meaning these values कि इसके अंदर के whatever values you are seeing except this column and rows, the inside matter is called as values. Okay, so based on these values you can sort your columns or rows. Okay, so now so very first example is about columns. So when I say df dot sort index and I added this axis equals to 1, it means whenever we say axis equals to 1, it means I am dealing with columns, and when I say axis equals to 0, it means I am dealing with my rows. Okay, so here I said axis equals to 1, I'm dealing with the columns, it means these columns should get sorted, right? So initially columns were like this, employee was first column, then first name was second column, age in the years was third column, and so on. But now you can see these columns have got sorted by using their first letter A, then B, C, D, E, F, and then so on, S, W. Initially this is how the sequence was, now this is how the sequence is. Okay, then I said df dot sort index and axis equals to 0, it means there should be a row sorting, right? And you can see initial the previous rows were like this 0 1 2 3 4, and the present rows are like this, but these are not changed because these are not supposed to change because all these rows are already sorted. In case if you had this 95th row, 95th row wala ye wala row at initial here somewhere, okay, then if you would have used sort index axis equals to 0, then this 95th index would have come to the actual position. Okay, so this is how it will sort. So I also gave one more example, dfx. So I said set index city, so this city column I set as an index. Okay, so now I can see this is how my city column looks like, and if I said dfx dot sort index x is 0, it means based on the city names these index are going to get sorted because I have said axis equals to 0, it means I am talking about rows. Okay,
So you can see Albion, Alcawa, Alma, Alri, Atlanta. Initially it was Nan, Stonewall, Michigan Town, Hyde Town, and somewhat. Okay, so these are got what I can say sort by their city names. Okay, so I think this is how, or this is what we have learned yesterday. So today, let's start with these things. Okay, so before I go to the next topic, please let me know if you have any questions. You can raise your hand, you can type in the comments if you have any questions, or if you have understood this one, you can say, let's go. You can type go, geo go, maybe. Okay, any doubts? Go, 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 go. All right, so let's continue with today's lecture, जिसमें we are going to learn sorting first. Okay, हम sorting देख लेते हैं, then if we have some more time, then we will go to the next topic. So sorting में now we want to learn to sort the values by the values which are present in it. Okay, उसके अंदर की values जो होती है वो कैसे, मतलब उस values को कैसे sort करें. उसके पहले we can learn one more thing. Let's say let's import pandas as pd, import numpy as np, and meanwhile let me just import the dataset. Okay, and इस dataset का मैं path copy कर लेता हूँ. I will say df equals to pd dot क्या था, read csv, राइट. csv रीड करना है, ब्रेसेस ओपन करना है, उसके अंदर मुझे ये डेटा सेट डाल देनी है. इफ आई से df dot head, and when I run this, I'll get this data set like this. Okay, so this is how my data set looks like. Okay, so now there is one function and also a interview question that people really like to ask, that is how to transpose the matrix. मैट्रिक्स कैसे ट्रांसपोज करनी है. Okay, so you can also call this a data frame, you can also call this a matrix. Okay, you can also call this a data frame, you can also call this a matrix. So this is how your data frame looks like, right? These are columns, these are rows, and when you say df dot capital T and when you run this, you can see whichever columns you had, those have become your rows, and whatever rows you had, those have become your columns. Transpose, what transpose mean is it will convert your rows into columns and vice versa. Okay, everyone got this? If I run this again, कुछ नहीं हो रहा है. Alright, so this is how you can transpose your columns into your rows into your columns. Why we mainly need it? Because at some point you want to see your data, or at some point you want to change, or you want to sort by values, or so on. Okay, so there can be multiple scenarios, but people, so you should know this. So your interviewer may ask you to give you it will give you
a data set and it will ask कि इसका जो rows है उसको columns में convert कर दो, columns को rows में convert कर दो. So that will be a difficult situation, because if you would have not known this dot t function जो transpose करता है, then it would have created some chaos. Okay, so coming back to the actual topic is sorting. Okay, sorting sorting values. So let's take mm, one function or one data set, that is df dot, जिसके अंदर हम कह रहे हैं what we are saying sort by index. We have covered sort by values now. Okay, and now, so this is my data set, I guess. Df is my data set, this is my data set. Now I want to sort the entire data frame based on this age in years. I want to know who is much younger, means whose age is very less, and I want to see whose age is like who is old in this in this employee data set. I want to know who are young people and who are old people. Okay, I want to know this. So for that I need to deal with which column? Years in age. Okay, and I will say df, or maybe df I have already said. I need to add this column name, and I need to add a filter that is यहाँ पर कहीं पे होगा शायद ascending equals to true. Okay, what I have said, data frame dot sort values. Okay, I have not said sort axis, I have said sort by values. किसमें? इस column में. You need to pass column name here, and then you need to pass whether ascending or descending. And when I run this, guys, so you can see all the young folks have come up and all the old folks are in the bottom of the data frame, right? It means Wayne, Pamela, Antonio, and Nancy Jack are youngest employees from this company, and this Sherlyn, Caroline, Annie, Carol, Paul, these people are the most experienced person from this company, right? So this is how you can sort by values. So you can sort by what your manager also like may give you this data, and they would say कि किसका salary सबसे ज़्यादा है. Let me know. Okay, whose salary is सबसे ज़्यादा. So you will say df dot sort values, and then you would add the salary there, and you will say ascending equals to false, right? False. If when you say false, you will get the highest value at the top, lowest value at the bottom, right? So now you can see Teresa is earning so much, and her age is also 24 years. Then you can see Christopher earning as good as Teresa and Sharon and even Jack, right? So these folks are earning much, whereas Caroline, Diana, Margaret are earning very less, even though their experience or age is high, right? So these kind of study you can do based on sorting the data. Okay, so one more thing, all these functions are, you can perform these function into an excel. कौन सी excel थी? Okay, so you can see like you can add a filter here, and based on these you can like sort by values. कहाँ पर? यहाँ पर filter by values, sort by colors, a to z, z to a, all these things you can perform. So this is some dummy data set, dummy column, rows, and values. You can perform all the functions, whatever functions you can perform in the data set or on the spreadsheet excel. All those functions can be done on pandas also. Okay, so we have seen the programmatical way of
अप्लाइंग द फिल्टर्स एज ऑफ नाउ और अप्लाइंग द सॉर्ट फंक्शंस. ओके, हमने सॉर्ट वैल्यू बोला है. All those values can be sorted like this. Here you can see sort by A and Z, sort by colors, because colors are have available, right? And sort by, you can also add a condition like this. Okay, so this is how it is. So a quick question, have we got this sort by values? Because this is important, we need to know how we sort the values. Okay, हम इसको, have you got this? Anyone type yes if you have got. Can we add any number inside head? Yes, yes, we can add any number. Sorry, I didn't see your message. Yes, we can add any number. I will give you one example. Before that, let me know if you have got this. Type yes if you have got this, and also give me a code for to get to know whose, I would say, the weight is very less and whose weight is very high. So sort it ascendingly. So write a code for getting the weights in a ascending way, in a ascending manner. So quickly let me know if you have got this, and I'm giving you 1 minute to solve this question. Okay, I want these weights, जो ये weight है ना, ये sorted चाहिए. Anyone trying? Last 7 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so it wasn't that much difficult, guys. Okay, Amol tried it. If anyone else trying, let me know. Okay, so let's say df dot sort values, and he said weights in and ascending equals to true. So that is right. Okay, so can I have one more filter कि अगर किसी का सैलरी भी सबसे ज़्यादा है, राइट, लाइक दिस, एंड किसी का एज भी सबसे ज़्यादा है, एज इन ईयर्स. सो इफ आई से एज इन ईयर्स, ओके, क्या ऐसे हो सकता है कि कैन आई अप्लाई फिल्टर ऑन दिस टू थिंग्स, सैलरी एंड एज इन ईयर्स? इफ आई रन दिस, मुझे एरर आ गया है. Alright, so when I am dealing with two values or more than one value, I may add this list, and yes, now you can see हमने कहा था false. So this is, Teresa is someone who is earning well and whose age is comparatively more. Okay, whose age is comparatively more. So then there is a Christopher who is earning equal, but his or her age, Christopher is a man, his age is huge. So basically you can have a filter on two columns at one time. Okay, you can have a filter where you can apply two columns at one time, right? You can also have something like this. Let me tell you that you want the salary, you want the salary to be high. Okay, you want the salary to be high, and you want the
age to be low, कुछ इस तरीके से. You want the salary to be high and you want the age to be low. So when you run this, you can see Teresa is someone उसका age कम है. अच्छा वही आ गए. But the situation is like this right now because the things are getting like this. So what will happen? Salary will be descendingly order and the age in years will be ascendingly order, but it will have some correlation in between. Okay, it will have some correlation. No one else tried. All right, let me answer to the Shiva Priya's question. So when I say df equals to pd dot read csv, I mention nothing. So when I mention nothing, I will get top 5. When I mention let's say 20, I will get top 20. When I mention 22, I will get top 22. Okay, so you can mention the values here also. All right, so we have quickly, let me just quickly revise. We have seen first transpose, df dot transpose, meaning df dot t. When I will do it, my columns will get converted into a rows and my rows will get converted into my columns. Okay, then I have seen sorting or sorted by values, meaning the values which are present inside I want to sort by them. So first thing I have seen df dot sort values and I wanted to do the age in years. I wanted to sort the age in years, so I added age in years and I have simply said ascending equals to true. Ascending equals to true meaning सबसे छोटा value will come ahead. Okay, and when I say ascending equals to false, it means सबसे बड़ा value will come ahead. I also got to know I can apply filter for 2 columns, 3 columns, 5 columns. Okay, and I've also got to know that I can apply in the similar way, can apply the ascending order, descending order and so on. Okay, respective for respective columns. Okay, so this is my understanding as of now. Any doubts here, guys? Any doubts? Any doubts till now? Any doubts till now? If there are, let me know if you have any questions. Okay, okay, I will consider that as no, but still if you feel any doubt, you can let me know. Okay, I'll wait for a minute for you to think if you have any doubt. छोटा मोटा हो सकता है, लाइक अरे ये कैसे करें, मतलब दिस इज़ लाइक बेसिक वेरी इजी थिंग बाय द वे. नाउ इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक. Okay, that will spike your interest more, and the topic is, I will say, important topic, null values treatment. Null value treatment. So this is a huge topic. In order to, like, a separate and huge topic, we will also be learning, or I would say we will be practicing this when we will learn machine learning. Okay, क्योंकि ये machine learning में हम use करते हैं. We use it very often. Like whenever you will work on any project, whenever you will work on any छोटा मोटा भी project, you will have to do this null value treatment. So null value treatment exactly है क्या? Okay, so let me just bring this data set ahead. So you can see these are some null values, right? These are some null values, and we cannot pass this data set directly to a machine learning because these null values it will not understand. And again, if there are null values, let's say we had this 100 rows
And out of these 100 rows, if we have 50 rows, let's say weight in kgs, we have 50 rows empty, then it won't make sense to pass this data to machine learning model, because machine will not understand if that data set has a 50 empty values. It will not make sense. Okay, so when we will learn machine learning, you will also learn how the model behaves and all. So as of now, our duty is, as a AI engineer or as a data scientist, our duty is that we need to do the treatment. Since we are scientists and we can be a doctor of a data, we need to do the treatment to these null values. Okay, so before doing the treatment, we need to find the null values. So for that I will say info, है ना, before you want to treat the disease, you need to find the disease. So you can see here there are 100 entries, meaning there are 100 rows. And are there null values? For employee id there is no null values. For first name there are no null values. For weight in kg, I think there are 3 null values, because total rows are 100 and I'm getting 97. It means there are 3 null values. Age in company, there is 1 null values, and city has 1 null values. And you can directly see it by your eyes also. Weight in kg has 3 null values, and age in city has 1, city has 1, and so on. Okay, so there can be some null values which are inside this dot line that we are getting. Okay, so how we can find? We can say like this. If you want to find complete null values, you can say df, uske andar you need to pass this column. So when you pass this column, you get this column. Okay, and if you want null values from this data, you can say is null or is na, है ना. You can say both the function work the same. So if you pass, you can say wherever you get null values, you will get true. Wherever there is null value, you will get true as a output. And you can also pass this sum function on it. So you will get there are 3 null values in your weight in kgs column. Okay, so you can also do the same for, I think there was one more column, right? City. So you can see there is one null values there, and age in company has also have one null value. Okay, so we got to know how to find null values. आपको पता चल गया where is the problem. So there are, these places have the problem. Okay, these places have the problem. Now I want to know how to do the treatment. Okay, so before going to the treatment, let me just show you few more functions. Like there is again there is one function called, if you want to know before, like if you don't have a, this data set, like you will have a data set, but if you want the column names which has a null value. Okay, which has a null value, so you can simply say df dot columns dot df, yeah, square braces के अंदर df, and you can say is na, yeah, is null, whatever you want to say, and on top of that you can say any. So what any will do, any will say कि कोई भी जितने भी कॉलम्स रहेंगे वो सारे लेके आ जाओ, like this. Weights in kg has null values, age in company has null values, and city has null values, right? यही चीज़ें देखी थी हमने. वेट्स इन केजी हैज़ नल वैल्यूज़, सैलरी तो नहीं. एज इन कंपनी हैज़ नल वैल्यूज़ एंड सिटी हैज़ नल वैल्यूज़, है ना. सो दिस इज़ हाउ यू कैन, दिस इज़ ऑल्सो, सो सी आई एम गिविंग यू हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन टू डू द सेम थिंग, है ना. और पांडास के अंदर देर आर मल्टीपल फंक्शन दैट यू कैन डू द सेम थिंग. You don't need to, mug up everything, but you should know everything. Like most of the things you should know. Okay,
अदरवाइज ये सब इंटरनेट पे मिल जाता है, वहाँ से उठा के आप कोडिंग कर सकते हो, देर इज़ नो इशू, दैट इज़ एक्सेप्टेड also. But you should know that this, if you want the columns you can say df dot columns, और उसके ऊपर ये वाला तो हम अभी तक तो कर ही रहे थे, कौन सा वाला, ये वाला, उसके ऊपर एनी का मतलब रहता है कि कोई भी जितने भी कॉलम्स है उतने जो वो सारे मुझे ला के दो. एंड देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड ऑल. नाउ दिस ऑल फंक्शन वर्क्स लाइक दिस. अगर इस डेटा फ्रेम के अंदर सारे ही कॉलम्स के अंदर ऑल द कॉलम्स, इफ ऑल द कॉलम्स कंटेंट्स नल वैल्यूज, तभी मुझे कॉलम्स दो. सो यू कैन सी it gave me empty. Why? Because in this data set all the columns are not empty. There are only 3 columns are empty. So you can, it is good to use any function, because if any one function has a empty column it will give that function name. और अगर कोई भी फंक्शन की और कोई भी कॉलम्स के अंदर इफ़ अगर एक भी नल वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पर भी ज़ीरो, मतलब ये आ गया होता. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ नल वैल्यूज़, या मतलब ऑल या एनी फंक्शन ऑन द डेटा फ्रेम, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. Any doubts? You can stop me if you have any doubts, guys. Okay, you can stop me anytime. अच्छा, is na means data type, object means, अच्छा, okay, is na. So we have in the yesterday's lecture, probably I have deleted that file. Is na gives you null values basically. एक example, let me give you one example. Okay, so when I say df dot city, okay, so when I run this I should get this column, right. I want to know how many null values this column has. Then I will say is na. is na means is एक होता है इसके अंदर, is मतलब है या नहीं, na means not a number या null values. Okay, so when I run this I will get this, जो जहाँ पर wherever the null values are present, I will get true. And if I add sum here I will get the sum. Okay, and if I do this, और एक चीज़ बता देता हूँ, इसको मैंने df के अंदर डाल दिया, so I will get error. क्यों आ रहा है भाई error? अच्छा, ये sum नहीं चाहिए मुझे. हाँ, so I will get that entire column like this. If I want which column has which column, तो I got city के अंदर ये जो वैल्यू है ये null वैल्यू है, but which row contains that null value. So you can also add it in a data frame. एक स्क्वायर ब्रेसेस में बस ऐड कर दो एंड वो मिल जाएगा आपको. ओके, सो दिस इज व्हाट द नल वैल्यू डू. सो डी टाइप ऑब्जेक्ट मीनिंग क्या होता है? लेट मी जस्ट आंसर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. df डॉट नल गिव्स नल वैल्यूज ना. हाँ, बोथ डू द सेम थिंग. जैसे अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ इज नल, सो इट विल ऑल्सो वर्क द सेम, है ना. df dot is na and is null are both the same, like exactly the same. मतलब I have not found any difference in it. I have used these two functions for like 7 years now, but these functions do the same work. There is no, I think initially when it was developed there may be some difference, but now I don't find the difference. Okay, and d type object means what? So d type int होता है हमारे पास, राइट. d type float होता है, and apart from this जो होता है
डी टाइप ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं वो. सो मेनली इसके अंदर स्ट्रिंग होता है. ओके, डी टाइप ऑब्जेक्ट मीनिंग मेनली स्ट्रिंग होता है. तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ है नहीं, तभी भी उसने ऑब्जेक्ट में ही डाल दिया, तो स्ट्रिंग हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. और एग्जांपल्स अगर मैं दूँ आपको, हियर यू कैन सी फर्स्ट नेम इज ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट डाल दिया उन्होंने. फर्स्ट नेम के अंदर जो भी डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, बट दे हैव नॉट एडेड स्ट्रिंग, दे हैव सेड ऑब्जेक्ट. ओके, एम्प्लॉई IDs आर इंटीजर्स, integer 64, these integer 64. And then age in years are float 64. So age in years are float 64, these all are float values. Okay, and again city is object, so city has string values. So you can say whenever you have string values or whenever you have empty array, yeah, list, it will considered as the data type is considered as object. Okay, I hope this is the answer to your question. I hope this is the answer to your question. If you have doubt, let me know, guys. Alright, so I am at a point now. I am at a point now. ये आई गेस इतने लोगों को समझ में नहीं आया होगा. सो यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल देता हूँ. DF के अंदर लेट्स से आई हैव सेड वेट्स इन केजी. ओके, एंड इफ़ आई से इज़ नल, सो इट विल गिव मी कौन सी वैल्यूज़ नल है, जैसे ये नल है, ये नल है, ये नल है. बट इफ़ आई ऐड दिस इनसाइड अ डेटा फ्रेम, एक इसके बाहर मैंने क्या डाल दिया, स्क्वायर ब्रेसेट डाल दिया, एक डेटा फ्रेम के अंदर अगर मैंने इफ़ आई कॉल दिस, सो आई विल गेट ऑल दिस 3 नल वैल्यूज़. जो 3 नल वैल्यूज़ थी ना वेट्स इन केजी के अंदर, उसका जो भी डेटा फ्रेम है, एंटायर डेटा फ्रेम आई विल गेट. सो हाउ दिस वर्क्स, दिस इज़ अ डेटा फ्रेम एंड दिस वर्क्स लाइक अ फिल्टर, है ना. आपने फिल्टर लगा दिया कि df.weights इन कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पर नल वैल्यूज़ है वो दे दो. So you got this data frame, entire data frame, and null values also. Okay, so this is how you can do it. Okay, so now this is अभी जितना भी हमने देखा, this is all about the detection. So I will say detection of null values and treatment, या treatment ही लिखते हैं, treatment of null values. Okay, these two things we need to we are learning. So first thing that I have already learned, that how I can detect. So ये हमने कल भी पढ़ा था, आज भी हमने प्रैक्टिस कर ली. That I need to use this, I can use this df.info function where I will get an idea which column has null values. I can also use is null, yeah, is na functions. So I have given you plenty of examples to use is na. और इसके अलावा is na मतलब यूज़ ही नहीं होता है, ऐसे पकड़ के चलो. कुछ either you can use directly on a column or inside a data frame, or using all function, or using any function, or using summation. So ये 3-4 के अलावा is na यूज़ ही नहीं होता है, ऐसे पकड़ के चल लो अभी आप. ठीक है, सो इज़ na हो या इज़ नल हो. सो यू हैव गॉट ऑल द एग्जांपल्स कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे डिटेक्ट करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़. क्विकली ये समझ लेते हैं, एंड देन वी कैन, आई विल लेट यू गो. ओके, सो द वेरी फर्स्ट method is dropping the null values. ड्रॉपिंग मीनिंग क्या होता है? ड्रॉपिंग मीनिंग ड्रॉप करना होता है, उसके अलावा कुछ है नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग df1 इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप
एन ए नाम से एक फंक्शन होता है. सो यू गेट ए ड्रॉप एन ए नाम से फंक्शन. एंड व्हेन आई रन दिस df1, सो उसके पहले मैं एक df दिखा देता हूँ हमारा जो df था. So this is how my df was. So this was, these are na values I had, right? All these na values. And when I say df dot drop na कर दो, मतलब जो भी नल वैल्यूज रहेगी उनको ड्रॉप कर दो. नाउ यू कैन सी फर्स्ट रो ही गायब है. फर्स्ट ये रो ही गायब है, ये रो भी गायब है, एंड ये रो भी गायब है. यू कैन सी 2 4 5. We have 2 and 4 directly. So what it has done actually, इसने जहाँ जहाँ पर wherever the null value was present, wherever the null value was present, it directly dropped the rows, drop कर दी वो value. So now if you check df1 dot info, now if you check, you can see all the values like I have 97 rows and all the values have 97 values, right? All the values have 97 values. So this is how you can do. So what my first option is, dropping the null values. बस directly drop कर दो, बात खत्म है ना. Second is fill na with some values. So ये दो ही methods हैं mainly. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रॉप एन ए फंक्शन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फील एन ए. सो फील एन ए क्या होता है इसको समझते हैं. ओके, आई होप ड्रॉप एन ए इज़ क्लियर बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई एम जस्ट यूजिंग दिस डी एफ एंड उसके सामने मैं बस ड्रॉप एन ए बोल दे रहा हूँ, एंड all the rows which contained null values are getting dropped meaning delete, है ना, ख़त्म. So now we are talking about fill na. So if I say, ये मेरी फिर से डेटा फ्रेम में बुला लिया. So this contains my null values. See, मैंने एक df1 नाम से एक डेटा फ्रेम में ये स्टोर किया था. My actual data frame is this. मैं df1 नाम से नई डेटा फ्रेम बनाई और उसके अंदर की all the values from the original data frame जिसमें से नल वैल्यूज़ थी वो मैंने डिलीट कर दी और मैंने स्टोर कर दी थी df1 में. बट नाउ माई df इज़ लाइक दिस, जैसे मेरा पहला df था. df मीन्स डेटा फ्रेम. सो देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड df डॉट फील एन ए. फील मतलब क्या? फील मतलब FEEL फील नहीं है, महसूस करने वाला फील नहीं. फील FILL मतलब फील करना. यार फील अभी क्या बोलूँ मैं, कंटेन करना मतलब भरना. जैसे ग्लास में पानी भरते हो ना, यू फील द वाटर इनसाइड अ ग्लास, लाइक दैट. ओके, सो इफ़ यू से आपके डेटा फ्रेम के अंदर दिस डेटा फ्रेम शुड कंटेन, जहाँ जहाँ पर नल वैल्यूज़ है, वेर एवर द नल वैल्यू इज़, आई वॉन्ट टू फील द विथ सम वैल्यूज़. जैसे लेटेस्ट मूवी कौन सा है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी, सो कौन सा है, द भूतनी, नहीं भाई, भूतनी चोरी क्या चल रहा है इधर. सो कोई, चलो ठीक है, एनीवेज बी हैप्पी नाम से अच्छी मूवी दिख रही है. सो लेट्स, अच्छी मूवी, आई एम नॉट श्योर मूवी की अच्छी है, नाम अच्छा लिख रहा है. सो आई विल से बी हैप्पी. ओके, एंड व्हेन आई रन दिस यू कैन सी वेर एवर आई हैड नल वैल्यूज़, यहाँ पर बी हैप्पी नाम से आ गई वैल्यू, है ना. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो ट्रीट. सो in a literal sense, or a data scientist never use something like this. They use something very special, but I wanted to, not really very special, but I wanted to tell you that whatever value you specify here, okay, you specified a string containing be happy, and then those null values got replaced with this word that is called as be happy. Okay, so meaning you could have also said
feel an A with let's say Amol. Amol नाम से आपने कर दिए feel. So everywhere you can see Amol, right? So this is how you can feel. Okay, but in in real scenario, you may want to fill the values with mean or median or mode or backward fill or forward fill. Okay, so ये क्या होता है? So for example, weights in kg, it means जो मेरा weights in kg कॉलम है इसके अंदर all the values are string. सो फॉर माई मशीन लर्निंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो नल वैल्यूज़ है यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सी चीज़ें ही अगर मैं ऐड कर दूँ, तो अगर मैं इस वेट्स इन केजी का मीन निकालूँ, एवरेज निकालूँ और एवरेज वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ, सो what will happen is that this फिलिंग द नल वैल्यूज़ विल मेक सेंस कि एवरेज वैल्यू डाल दी तो इतना ज़्यादा ये नहीं हो गया, मतलब सेंस कर गया है ना. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द मीन. ओके, सो व्हेन आई से इफ़ आई से मीन इक्वल्स टू डी एफ और उसके अंदर एफ आई से क्या था, वेट्स इन के जी था, राइट? वेट्स इन के जी डॉट मीन एंड आई विल से मीन. तो मीन मुझे मिल रहा है 58.11. Okay, I'm getting the mean value as 58.11, right? So now I can say I want to add these, क्या कहते हैं, weights in kg के अंदर 58.11 as my mean value. So I will say df, अरे यहाँ पे आ जाओ, df और उसके अंदर I will say weights in kg equals to df and उसके अंदर again weights in kg and I will say डॉट फील एन ए, है ना, वो फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे एंड उसके अंदर मैं बस मीन वैल्यू पास कर दूंगा, ये वैल्यू, राइट? एंड when I call the data frame, you can see all the values wherever, जैसे weights in kg के अंदर जहाँ जहाँ पर null values थी, wherever the values were null, वो 98 नहीं 58.11 से रिप्लेस हो गई, राइट? सो दिस इज अ लॉजिकल फील. लॉजिकल फीलिंग मतलब आप लॉजिकल वैल्यू उसके अंदर डाल दिए सो दैट योर मशीन लर्निंग मॉडल विल नॉट हेलुसिनेट, है ना, इट विल अंडरस्टैंड द सेंस बिटवीन द डेटा. ओके, सो यू कैन ऐड द, क्या कहते हैं, मीन, क्या कहते हैं यार इसको, मीन वैल्यू. यू कैन ऑल्सो ऐड मीडियन. तो मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मीडियन, बट मुझे मीडियन एन पी डॉट मीडियन, बट मुझे मीडियन कैलकुलेट करना होगा ऑफ 1 सेकेंड. अभी एज इन कंपनी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? एज इन कंपनी and here I can say median equals to df और उसके अंदर मैं बोलता हूँ एज इन ईयर्स. अच्छा, एज इन कंपनी के लिए डाल रहे हैं ना हम, एज इन कंपनी डॉट मेडियन. वैसे मेड जहाँ पर मीडियम हो गया है क्या ये, median. So median is 5.93 and here I will just add this median and when I call this data frame, एज इन कंपनी के अंदर जहाँ पर नल वैल्यू थी, कहाँ पर थी, यहाँ पर थी शायद, सो 5.93 उसके अंदर ऐड हो गया. सो यू कैन ऑलवेज ऐड मीन वैल्यूज़, मीडियन वैल्यूज़ वेर एवर यू वांट. ओके, एंड देन बच्ची बात, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड भी ट्राई कर सकते हो आप, यू कैन ट्राई इट होम. लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू बैकवर्ड फील एंड फॉरवर्ड फील. ओके, देन रिवाइज कर लेंगे एंड क्वेश्चन, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस you can let me know. Okay, so null value gives, yes, you are right.
राइट. सो बैकवर्ड फील क्विकली देख लेते हैं. बैकवर्ड फील एंड फॉरवर्ड फील इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं उसके अंदर. सो एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ. लेट्स से डी एफ अगर मैं मांगता हूँ तो डी एफ इज़ किसको फील करे. हमारे पास ज़्यादा नल वैल्यूज़ है नहीं अभी. सो मैं फिर से डी एफ टू इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी एंड उसके अंदर फाइल नेम डाल देता हूँ, जैसे ये वाला, एंड df2 बुला लेते हैं. नाउ वी हैव नल वैल्यूज़. ओके, सो इन नल वैल्यूज़ को हम बैकवर्ड फील एंड फॉरवर्ड फील से फील करते हैं. ठीक है. सो गोइंग अहेड, सो व्हेन आई से df2 एंड एक कॉलम ले लेंगे. लेट्स से कौन सा है, सिटी ले लेते हैं. एंड हेयर इफ़ आई से df2 को मुझे बैकवर्ड फील करना है. ठीक है. बैकवर्ड फील मतलब उसके अंदर जितने भी नल वैल्यूज़ है, जैसे सिटी के अंदर यहाँ पर नल वैल्यू है. ठीक है. सो आई विल से df डॉट सिटी एंड आई विल ऐड द माई फील एंड ए वाला फंक्शन. एंड उसके अंदर आई जस्ट नीड टू मेंशन दिस मेथड. मेथड आया नहीं यार. मेथड इक्वल्स टू बैकवर्ड फील. ओके, लेट्स सी ये वर्क करता है नहीं करता है. एंड व्हेन आई कॉल दिस df2, सो यू कैन सी दिस, यहाँ पर नल वैल्यू थी राइट. यू देयर वाज अ नल वैल्यू. सो इसके बाद का जो भी वर्ड था उसने इसको बैक फिल कर दिया. सो वेर एवर द नल वैल्यू विल बी, दैट विल गेट फिल्ड बाय देयर नेक्स्ट वर्ड. ठीक है. एंड फॉरवर्ड फील क्या रहेगा, सिमिलरली वही रहेगा. अगर मैं बैकवर्ड फील का और एक एग्जांपल देता हूँ, हियर यू कैन सी बैकवर्ड फील हो सकता है. सो हियर 58, ये जो 58 है ये बैकवर्ड फील कर देगा यहाँ पे, और 68 इनको बैकवर्ड फील कर देगा. ठीक है. वेट्स इन केजी के लिए देखते हैं अभी. सो आई विल सिंपली से ये वाला, एंड वेट्स इन केजी मैं रिप्लेस कर दूंगा सिटी से. ठीक है. एंड फील इन्हें यूज़ कर रहा हूँ एंड मेथड इक्वल्स टू बैकवर्ड फील. सो व्हेन आई रन दिस यू कैन सी यहाँ पर 58 था, यहाँ पर नल वैल्यू थी तो 58 से होगी. और ये भी, अच्छा ये भी 58 सी, जहाँ पर भी नल वैल्यूज फर्स्ट थी उससे ये सब फील हो गए लॉजिकली. ओके, आई थॉट दिस 68 विल टेक, बट इट टुक ओनली द 58. या ये अलग है, ये 58 नहीं, ये अलग वैल्यू है. ये ऐसा क्यों कर रहा है. अच्छा ये, वेट, df2 गाइस, यहाँ पर df2 चाहिए. सो उस हिसाब से यहाँ पर भी तो df2 चाहिए. सो दिस इज़ राइट. लेट मी जस्ट रन दिस वन. हाँ, नाउ यू कैन सी. अच्छा नहीं, वो एक बार चल गया यार. कहाँ पे अभी, वेट्स इन केजी. हाँ, नाउ दिस इज राइट. You can see here it was null values, these three were null values. So 58 got replaced by null value and then 68 replaced the null values. Okay, so now this is a right logic. So backward fill क्या करेगा, if I want to explain you through the board, ये टाइम ले लेगा. चलो ठीक है, यही से समझ लो. सो हियर नल वैल्यूज वर प्रेजेंट और उसके बाद का जो भी वैल्यू वो उसको फिल कर देगा.
एंड फॉरवर्ड फील भी सिमिलर सा लॉजिक है। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एज इन कंपनी ही बचा है, सो मैं एज इन कंपनी ले लेता हूँ। सो नाउ एज इन कंपनी जो है, ये जो नल वैल्यूज़ हैं इसको ये 13.68 फील कर देगा, है ना, कुछ इस तरीके से, बिकॉज ये फॉरवर्ड का वैल्यू जो सामने वाला वैल्यू उसको फील कर देगा, भर देगा। सो यू कैन सी 13 पॉइंट, अरे यहाँ पर नहीं हुआ ये भी बैक, अच्छा यार यहाँ पर बैकवर्ड फील नहीं डाला, अभी ये एरर दे देगा शायद, क्योंकि नल वैल्यूज़ ही नहीं है इसके अंदर। फिर से डेटा फ्रेम रन कर दी हमने, and when I say forward fill you can see 13.68 replace the null values with 13.68. So this is how you can use the backward fill and forward fill. Okay, so this is all about the null value treatments. एक बार क्विकली मैं ये रिवाइज कर देता हूँ, देन opening for a doubt session guys. Okay, so if you still have any questions you can anyway type in the comments. कहाँ से शुरू किया था? ओके, लेट मी रिवाइज एवरीथिंग। अच्छा, नल वैल्यूज़ अभी गरम गरम टॉपिक है तो समझ लेते हैं। सो हमने देखा हाउ कैन आई डिटेक्ट द नल वैल्यूज। ओके, वी प्रैक्टिस दिस yesterday also, we learned this yesterday also, practice today also and learn today also again. So there are these two functions. First is null and is na. So these two function will give you where in the columns or where in the data set there are null values. Okay, and this is also used as along with summation, along with dot any, along with dot all function. Okay, so all these things will give you where the null values present. Then once you got the null values you can do the treatment using dropping the null values. ये direct straightforward है. You if you directly say df dot drop na, it will just the rows delete the rows which contains the null values. When this is important, when you can do this, for example, there are like very few null values, so it will just drop the null rows. Okay, but consider that out of 100 rows 70 rows have null values, and if you directly do the drop na, what will happen? You will just left with 30 rows, and that does not make any sense, right? सारा ही डिलीट हो गया तो क्या कर लोगे, है ना? So drop na is not useful in that case. Then you have this another function called as fill na, df dot fill na. So what it will do, it will directly fill the na values, the nan values, not a number values or empty values, with whatever you specify here. Okay, so I specified be happy आ गया यहाँ पर, मूवी का प्रमोशन हो गया फ्री में. देन आई फील्ड विथ अमोल यहाँ पर डेटा फ्रेम में अंदर आ गए, है ना. देन आई ट्राई टू फील विथ मीन. सो मैंने आई हैव कैलकुलेट अ फील मीन और एवरेज ऑफ वेट्स इन केजी कॉलम. ये जो मेरा वेट्स इन केजी कॉलम था उसका मैंने एवरेज निकाला. द एवरेज केम आउट टू बी 58.11 एंड देन आई हैव जस्ट फील्ड द वैल्यूज़. सो यहाँ पर जो फील एन में लगा रहा था डेटा फ्रेम के सामने, वहाँ पर मैंने बस आई हैव जस्ट एडेड द मीन. द मीन वॉज 58.11. So you can see 58.11 is here. Okay, so you can also add median, you can also add mode and so on. Okay, so I'll let you practice the things, the rest. So later I have seen backward fill and forward fill. Backward fill क्या करेगा? Let's say backward fill में ये values इस नैन पे आ जाएगी और यहाँ पर ये 58 आ जाएगा. ये दो नैन वैल्यूज़ पे, नल वैल्यूज़ पे 68 आ जाएगा.
और यहाँ पर 0.98 आ जाएगा। और वही अगर मैं फॉरवर्ड फील करता हूँ तो ये नल वैल्यू पे 38.68 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 68.0 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द फॉरवर्ड फील। ओके, backward forward feel confused. Acha, there are some questions. Backward means at last it needs to feel right. mm, Not that confused, maybe I made somewhat difficult you to understand because the data set was somewhat not really confused, but thoda. Okay, let me just explain it here. Okay, कहाँ गया, और एक लेते हैं। अरे यहाँ पर तो ऑलरेडी है ना, तो why do we don't need this. So for example, अरे this is your column. Okay, these two are your column. So here one value is there, one value is there, one value is there, one value is there. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 4 है। ओके, सो व्हेन यू से दिस इज़ नल वैल्यू, ठीक है, ये नल वैल्यू है NaN। सो व्हेन यू से बैकवर्ड फील, सो ये क्या करेगा, ये इसको फील कर देगा। ओके, इट विल जस्ट फील दिस वन, इसको भर देगा ये। बैकवर्ड फील हो गया, मीनिंग यहाँ पर रहेगा 1 then 2 and 3 and 4, बट दिस इज़ वॉट बैकवर्ड फील। ओके, एंड फॉरवर्ड फील में क्या होगा, फॉरवर्ड फील ये हो गया कि ये क्या करेगा, जो मेरा फॉरवर्ड आगे वाला नंबर है उसको मैंने आगे वाली जो जगह है वहाँ पर आई विल ऐड द वैल्यू। ओके, दिस इज़ द मीनिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बैकवर्ड फील एंड फॉरवर्ड फील। ये क्या करेगा, बैकवर्ड जो मेरा पिछले वाला नंबर है उसको मैं फील कर दूंगा, ये मेरे सामने वाले नंबर में फील कर दूंगा। कंसिडर देयर इज़ अ स्टूडेंट का लाइन लग चुका है ना, और ये जो 2 नंबर का स्टूडेंट है वो पिछले वाले दोस्त को, उसके पिछले वाले दोस्त को क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। बैकवर्ड फील, उसका पेट भर दिया। और ये फॉरवर्ड फील कर दिया इसने, जो उसके सामने वाला लड़का है उसको खिला दिया। सो दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन सी हियर। जो जो मेरा पिछले वाला लड़का है उसको मैंने 58 वैल्यू दे दिया, इट मीन्स बैकवर्ड फील हो गया। या जो मेरे सामने वाला लड़का है उसको देन आई हैव गिवन द वैल्यू 13.68, दैट हैज़ बिकम अ फॉरवर्ड फील। ओके, this is the only thing about backward feel and forward feel. So I hope this is clear now, guys. Mainly Shivapriya, any questions, guys? Let me know if you have any chota mota question. Quickly, if you have a question, let me know, guys. Acha, I cannot hear you for a reason, I am not sure why. Can you say again? Okay, okay. Can you say? Acha, sure. Mm, okay, let's try with an example maybe, or let's try with the example, or okay, एक let's take one. mm, ज़्यादा जूम इन हो गया, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट डेटा सेट। ओके, अरे इसका रो ज़्यादा लंबा हो गया। लेट्स से दिस इज़ माय डेटा सेट।
Okay, this is column 1, column 2, column 3. Right, now I am saying here is a as a value, here is 2 as a value, here is b as a value, here is 3 as a value, 3 as a value, 4 as a value, 4 as a value. Right, now I want to use I want to use the backward field method. Okay, I want to use the backward field method on 2. So I will select this 2 column, I will select the column number 2, and then I will simply say fill NA with backward fill. Okay, so what it will do, ये इसका बैकवर्ड हो गया, ये इसका बैकवर्ड हो गया, है ना, इसका बैकवर्ड हो गया. So this 3 will come here. So this is called as backward fill. Okay, this is called as backward fill. And येलो ले लेते हैं. व्हेन आई से फॉरवर्ड फील, अभी यहाँ पर बैकवर्ड फील मैं यूज़ ही नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर कुछ है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर एम्प्टी ही रहेगा. बट यहाँ पर 3 आ गया बिकॉज मैंने पीछे वैल्यू डाल दिया. ऐसे पकड़ के चलो, ऐसे फ्लो करता है. ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है. सो ये पिछला वैल्यू हो गया. 2 का ए इज़ अ पिछला वैल्यू. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू यूज़ द बैकवर्ड फिल, सॉरी फॉरवर्ड फिल. सो फॉरवर्ड फिल में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा. सो यहाँ पर 2 आ गया. सो दिस इज़ ए फॉरवर्ड फिल. ये मेरा फॉरवर्ड फिल हो गया, मीनिंग 2 विल बी गेट फिल्ड एट द नेक्स्ट रो. एंड ये मेरा बैकवर्ड फिल हो गया. बस इतना ही है, सिंपल है. आई गेस वो ऐसे जितना डिफ़िकल्ट है नहीं वैसे. मे बी यू कैन व्हेन यू विल डायरेक्टली यूज़ दिस कोड्स, राइट. फिल लेने के अंदर मेथड बस बैकवर्ड फिल फॉरवर्ड फिल. इंटरव्यूअर बस इतना ही पूछेगा कि बैकवर्ड फिल फिल लेने के कितने कौन से टाइप्स आप कर सकते हो. यू कैन व्हाट यू कैन यूज़, यू कैन से मीन से आई कैन ट्रीट द फील null values. I can trade the null values with the median mode, or you can also say backward fill, forward fill. Then interviewer may ask what is backward fill or forward fill. So you can say for backward fill, so the next value can fill the backward. Basically इसके सामने वाला जो यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू फील करनी है तो सामने वाला बंदा डोनेट करेगा पिछले वाले बंदे को. सो इट विल फील बैकवर्ड, पीछे भर देगा. एंड फॉरवर्ड फील मीनिंग द पिछला वाला पर्सन सामने वाले को फॉरवर्ड में फील कर देगा, सामने फील कर देगा. लाइक दिस, लाइक दिस. जैसे लेट्स से आप you are giving water to plants, you have the water jar in your hand and you are standing in front of the tree, है ना. सो आप एक ट्री के सामने खड़े हो. सो यू आर फिलिंग द वाटर, आप पानी दे रहे हो वो ट्री को. देन इट इज़ यू आर डूइंग अ फॉरवर्ड फिल, आप सामने वाले ट्री को पानी दे रहे हो, है ना. और अगर आपके पीछे वाले ट्री को अगर आपको पानी देना है तो यू आर डूइंग बैकवर्ड फिल. So consider this is you and this is your tree जो आपके पीछे है. So you are doing the backward fill. और अगर this is you and ये आपका ट्री है जो आपके सामने है and you आप इसको पानी दे रहे हो, it means it is a forward fill. I hope this is clear now. Maybe. Yes, no guys. Yes, no. Right, opening for a window for more questions. Some more questions. If you have some more questions, let me know, guys. Alrighty, let me know. And if you have understood everything or most of the things, type in the comments.
Anyone, any question? Anyone, any question? Even backward fill, forward fill, if it is not much clear, I will again take tomorrow, so no worries. And if you have some more question other than this, let me know, guys. In the group that we have, group ka link you'll find in the description. And I think from YouTube, okay, no questions. Good, good, good. All right, guys. Then we can close today's class and see you in the final lecture of Pandas tomorrow, and then we will revise entire Pandas if you guys need. Okay, so that's it for today. कल का lecture mainly ज़्यादा important रहेगा if I made it possible, because I will be traveling maybe, but अगर possible होता है तो I will